morning, guys. Am I audible? Unless students, let me know. Today we will continue with our syllogism Venn diagrams. PYQs बचे थे कुछ. We have covered till this, I think. Yes. ये हुआ नहीं है ना? ये हुआ है? Okay. Yes. Good morning, Sneha, Shagun. Please try this question by both the methods. Firstly, using Venn diagrams, and then using our income expenditure. You know Venn diagram, Selva? We have covered this in the yesterday's class. One point, no? Yes, CSAT 1.0 we have entire week and we will finish. Yes, Niranjan. Venn diagram draw कर दी. Okay. निरंजन, सी कौन सा सी किया? वो इनकम एक्सपेंडिचर या फिर तीनों रॉन्ग कैसे आएंगे? नहीं आ रहे.
बिल्कुल नहीं है। वे देखो वेन डायग्राम से सम रैट्स आर कैट्स, वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस, सम रैट्स आर कैट्स, मोस्ट जनरल फिगर. Some cats are dogs. Now dogs can come here, that is dog 1, or it can come something like this as well. ऐसे भी आ सकता है. And third, no dog is a cow. So in between dog and cow there is no intersection. These are cats. So cow can be anywhere except for this intersection. So it can be here like this, it can be here like this, it can be here like this. कहीं भी हो सकता है. We don't know absolutely anything. We know absolutely nothing. यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Fine. So conclusions: no cow is a cat. We don't know that. So this is wrong. No dog is a rat. No dog is a rat. We don't. We do. We don't know that. This case where dogs are rats. So this is also wrong. And third, some cats are rats. Yeah, of course. Some rats are cats. Then some cats are rats. This is Venn diagram. And our second method was that of income expenditure. First, positive statements. This is negative statement. So this is no cow is a cat. Cow and cat where are there? Cow and cat. Second and third. Positive, negative sentence. It can be implied, possible. Second, dog, rat. Dogs and rats. First and second. Positive, negative sentence cannot come as outcome. Cats, rats, some. That is not problem. So now let's look at the first, cow and cat. Cow and cat. So dogs, here some, 50, 50, dog, cow, 100, 100, 100, 100, 50, 50. And one dog is common, it is 100. So that is fair. Cow, cat, 50, cat, 100. Income is 50, expenditure is 100. Not true. 100, 100. So first is also wrong. And finally 50, 50, 50, 50. That is correct. Cat and rat. 50, 50, 50, 50. Huh? So answer is C. Both are fine. Whichever method you are feeling more comfortable with, you can pick that and stick with it. Yes. Next question. Please attempt. Okay. Good. Ashwini, Shagun, Sandeep. Yes, this is a puzzle, Sarah. This is not a syllogism question per se. Can treat it as if it is a puzzle. Niranjan. Why?
So this is a situation where there are 100 people, 70 are Indians and 60 are vegetarians. We want to comment on at least how many are veg and at least how many are non-veg. So at least meaning we have to take worst case scenario कि कम से कम कितने होने ही चाहिए. Maximum you give to non-veg, in this case maximum Indian you make non-veg and find out how many still vegetarian have to be there. And in second case you make maximum Indians veg and still see how many non-veg people have to be there. Okay, good, Karthikeyan. Hmm. See. First statement, it is about Indian participants vegetarian. At least how many Indian participants are vegetarian? To make as many Indians non-veg as possible. And still see how many at least have to be veg. Yeah. So out of 170 are Indians and 60 are vegetarians. So 40 are non-vegetarians. Make 40, all 40 non-vegetarians are Indian. That is a possibility. If 40 are non-vegetarian, how many are vegetarians? Still 30. So at least 30 Indian participants are non-vegetarians. Worst case scenario लेना है कि अगर if we want to comment upon at least how many are vegetarians, then we want to make as many people, as many Indian participants non-vegetarian as possible and still see how many vegetarians are there. Second, at least 10 Indians are non-vegetarian. So make all of the maximum possible Indian vegetarians. So out of 70, make 60 Indians as vegetarians. So still 10 have to be non-veg. So both the statements are absolutely correct. You know how much actual percentage of Indians eat non-veg? Guess. If you want to guess. Achha. Shagun is saying 90. You are saying 40, 30, 30, 40. Hello, 40, 40, 60. That's a huge range then. Achha, 40 non-veg, 60 veg. Do you eat non-veg? No. Okay, good. Not good, but okay. More than 50, Ashwini. 70. So majority of people eat non-veg. Indian on all India average is around 60%, 60 to 65%. State-wise, it differs. In states like Gujarat, it is more people are vegetarian than other states. In South India, almost all people are non-vegetarians, right? In some South Indian states, will be like 90% is also there. Imagine North Indian states who will eat veg. So yeah, in no, in other states as well, majority of people do eat non-veg. Yes, do eat non-veg. 2 out of 5 in our class. Okay. No, no, आप vegetarian हो ठीक है, but you are still in minority in India. मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ शगुन, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. हाँ.
अलग है। पोक तो मेनलैंड बहुत खाते हैं। हाँ हाँ, बहुत, मतलब दे इट एक्चुअली एनी मूविंग थिंग, मतलब एनीथिंग रियली, राइनोज, मंकीज, स्नेक्स, एनीथिंग। यस। हाँ हाँ, सब खाते हैं मूवी। बर्ड्स, दे कैन ईट एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। दे आर ट्राइबल सोसाइटीज, नो, सो देयर वे ऑफ लाइफ। हम्म। अच्छा। हम्म। तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है हमें काफी कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर नॉन वेज, बट यस इट इज ट्रू। And it's in most states it is more than 60%. Some states like Gujarat, they bring down the average to 60. Huh. Anyway, let us move on to next question. Vegetarian food is always good. Okay. Says the person who has not never eaten non-veg. Acha. Why did you leave then? चलो क्वेश्चन करो, हो गया डिस्कशन खत्म। ओके। हम्म। इतना टाइम क्यों लग रहा है? इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। Let this be all the members of the club who went to Mumbai. So to get rid of the percentage sign, we can assume that there are 100 people. Fine. What they are saying now? These are the people who went for shopping. These are the people who went for sightseeing. I am writing it SS. This is SS, shopping. And 10% took rest in hotel. So these are 10 people who are outside this. They are part of the club who went to Mumbai, but they didn't go to shopping or sightseeing. So 10 are outside. So 90 are inside. Out of that, 80 are here, 50 are inside this. Correct? So let, कैसे करोगे? Let this be x. Then this is 80 minus x. And this will be then, and total there are
90 people, na? 10 are outside. 80 minus x plus x, which is 80, plus 50 minus x. 130 minus x is 90. So x is 40. X की value आ गई. So here there are 40 people. Here there are 40 people. And here there are 10 people. Otherwise also you can think these are 80 people, these are 50 people. 80 plus 50 is 130. But in total actually there are only 90 people. So 40 people are in common. Total these are 80 people, those are 50 people. 80 plus 50 130 होता है. But total there are only 90 people who went out. So 40 people are common. So 40 here, 10 here. 100 ही लिया मैंने भी total. But 10 people took rest na. You couldn't consider that then. 40% members went for shopping as well as sightseeing. बिल्कुल. 20% went for only shopping. No, it is 10%. So, you know, 20% purposefully दिया है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए. तुम्हारा आया होगा सही वो. हाँ. Where you forget these 10% people. Salwa. Yeah, these are sightseeing people. These are the people who took rest in the hotel. They are outside both these circles. हाँ, 20% went only for shopping, meaning these people. Only for shopping. Okay, only for shopping है क्या? Oh, then these people. So answer is actually 40. They have given 20. Okay, answer is A, one only. Next question. Okay. Question is cannot be drawn. ना? Question पढ़ा करो अच्छे से. पक्का गलत थे तुम तो. Cannot be drawn has at least two correct answers. Then you were definitely wrong. D से A पे आके D बोल रहे थे तीनों सही है. अब बोल रहे पहले तो गलत है. Okay. A. अच्छा A. C. We have three answers now. We have in a school 60% play cricket. Let us get rid of the percentage by assuming there are 100 students in class. ठीक है. So these are the students who play cricket. ठीक है. Let these are the students who play football and these are the students who have bike ना. ऐसा नहीं आएगा फिर वो. हाँ चलो.
These are the people who play cricket. These are the people who play football. ठीक है. These are 60 people inside. So this we have 40 because everybody who does not play cricket plays football. And this plus this we have 60 total. So if this is x, this is 60 minus x. Fine. कोई problem? नहीं. Okay. Every football player has got a two-wheeler. So these are the people who have two-wheeler. Correct? So in this area there are no people. This is just a Venn diagram to show this thing, but this is zero. In the shaded area there are zero people. Here could be people because ये total मिला के पूरा class है. इसके बाहर यहाँ पे कोई बच्चे है नहीं. Fine. Which of the following conclusions cannot be drawn? Cannot be drawn. 60% people do not have two-wheelers. 60% meaning cricket wale. They do not have two-wheelers. Can it be drawn? No, there can be people here. And these X people तो definitely have two-wheeler who play football as well. मतलब first is cannot be drawn. Second, no cricketer has a two-wheeler. Again same thing. This also cannot be drawn. Cricket players do not play football. Again, no, it cannot be drawn. ये क्यों ट्रू है भाई? क्रिकेट कोई क्रिकेटर फुटबॉल खेलता ही नहीं. जो क्रिकेट खेलता नहीं वो फुटबॉल खेलता है. बट क्रिकेट खेलता है वो भी तो फुटबॉल खेल ही सकता है. हाँ. The person who does not play cricket plays football. It says nothing about person who plays cricket. दोनों स्पोर्ट्स भी तो खेल सकते हो. कोई रोक है क्या? नहीं. You can play both sports, no problem. The answer is going to be D. No, none of these conclusions can be drawn. Next. Yes, very good. Very easy. Yes. अरे मतलब हॉकी शर्ट पैंट की बात कर रहे हैं वो लोग. मतलब ओवरऑल अगर हॉकी का शर्ट पहना है तो ऐसा नहीं कि पैंट पहने बिना आया वो दूसरा पैंट पहन के आया. यस सेल्वा डन. निरंजन डन. नहीं. मैं क्या सोच रहा हूँ?
these are people who wearing shirts, these are people who are wearing pants. हमें पूछा क्या है कि who are the people wearing full uniform, मतलब कॉमन में कितने हैं? टोटल यही है, ये बोला गया है देयर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट्स और पैंट्स, मतलब इन दोनों में से एक तो पहना ही है यूनिफॉर्म के बारे में. So we have 11 plus 14 is 25. So there are only 19 boys, so 6 are in common. Answer is going to be 6. Next question करो. Very easy, just draw the Venn diagram and plot it. Start from the common and come outwards. कैलकुलेशन एरर हो रहा होगा कहीं. पूछा क्या है, देखा है क्या? Okay. Yes, Selva. Yes. Why are you guys taking so much time? This is not a difficult question at all. पुराने जमाने का क्वेश्चन है. प्लॉट करना है बस. हम्म. शायद नहीं. These are all the people. These are magazine A, magazine B, magazine C. Right. Now we have start from the common middle one. 10% read all the magazines. So these are 10 people. Correct. Then A, B, C. Let me name. How many of them? Now come to two magazines at a time. 25% read A and C. So A and C 25%. Out of this is 10. So this is 15. A and B 15%. No, 15% B and C. 15% B and C. So this is 5. 30% A and C. So this is 20. Correct. Now what is magazine A? 45%. 20 plus 35 plus 10, 45. So 0 people here. Then for 55% magazine B. 20 plus 30 plus 5, 35. 35 and this is 55. So this is 20. Then 40% read magazine C. So this is 20 plus 10, 30 plus 10, 40. हाँ तो इंदर वाले की देखिए कितने हैं. How many people are inside now? 20 plus 20, 40, 50, 60, 70, 80. 80 people are inside. So 20 are going to be outside. बिल्कुल हो जाएगा.
फॉर्मूला जो हमने बोला था, नंबर इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला हमने किया था। डालो अब इसमें बस वैल्यूज। दीज आर 45 प्लस 55 प्लस 40 माइनस 30 माइनस 15 माइनस 25 प्लस 10, ये आएगा 80। So you have number of people in A union B union C, that is inside it is 80. So outside it will be 20. This visual representation, this is using the formula, if you remember. ये formula भी यही से आता है. You have seen this. Is 100 plus 40, 140 minus 40 plus 30, 70 minus 70, 140 minus 70 is 70. 70 plus 10 is going to be 80. ठीक है, all the values are given here. चले आगे. Next question. आ गया. Very easy question. There are 130 people who are appearing. 62 failed in English, 52 failed in maths, and 24 failed in both. So what is the number of total people who failed? NA plus NB minus N of A intersection B. So if 62 plus 52, 114 minus 24, so 90. So 90 people failed. So who are the number? What number of students who passed is 40. 130 minus 90. Correct? Next question. You can again draw a visual representation, or you can do it by formula.
Yes. Okay. How did you do? By formula or by Venn diagram? Hmm. 22 आ रहा है, 23 आ रहा है. So let us start by common. There is only one person who can speak all the languages. Then we have if two persons in that group can speak two languages only. तो मतलब क्या ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लैंग्वेजेस है. तो मतलब ये प्लस ये मिला के टू है कि टू 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 है. हाँ, आप यहाँ पे टू 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 ले रहे हो क्या? अच्छा. हाँ, ये आ गया. इतना कम कैसे आ गया? इसमें क्या गलत हो गया फिर? हाँ. हम्म. ये जीरो जीरो ऐसा. It doesn't matter ना. We just have to calculate total number of people. It doesn't matter. If you take this, then you will get 12, 6. No, 5. And this is 3. What is the answer here? 23 ना. 12 plus 3, 15 plus 3, 18 plus 5, 23. यहाँ पे लैंग्वेज देखो. इफ टू पर्सन्स इन द ग्रुप कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस ओनली. कौन से टू लैंग्वेजेस डजंट मैटर. बट टू लैंग्वेजेस ओनली वाले लोग दो ही है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. मतलब दिस दिस प्लस दिस इज टू. If you put in the formula, you'll get Na plus Nb plus Nc minus N of A intersection B minus N of A. It's N of A intersection B minus N of B intersection C minus N of A intersection C. ये सब कुछ मिला के दो है. एंड देन प्लस वन लास्ट वन N of A intersection B intersection. इससे क्या आता है? 27 minus 2 25 plus 1 26. तो ऑप्शन में नहीं है. अब क्या होगा? ये क्यों नहीं आ रहा फिर? हाँ, ये भी तो सेम ही कर रहे हैं हम लोग. इस पे क्या आ क्यों रहा है उस पे? ऑफिशियल आंसर है नहीं ना. इट्स 2015. आओ, यहाँ पे ये गलती हो गई.
In this formula, we have to subtract this 3 times, the middle one. Not just these people, na? We have to subtract middle one 3 times. So we have to subtract actually 5. अब आ जाएगा. Yes, 22 plus 1. ये गलती हो. अरे हम ये बीच वाला जो है ये भी तो सब्ट्रैक्ट होता है ना, ये पूरी चीज हर बार सब्ट्रैक्ट होती है, नॉट जस्ट ये वाली शेडेड. तो पूरी चीज अभी कर नहीं रहे थे हम लोग, 2 ही सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना. वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 ओनली, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 2 plus 1 0 plus 1 0 plus 1, so मतलब 5. If you are using formula, you have to subtract not 2 but 5. This middle one has to be subtracted 3 times, then only it is added 1 times. ये था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था फॉर्मूला में. बट एनीवे, इससे तो क्लियर है. दिस इज क्लियर. आंसर इज गोइंग टू बी 23. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट. अच्छा, ऐसा सिनारियो है. These are people who read X, these are people who read Y. These are the people who read only X. These are the people who read only Y. This circle is a people who read X. Only X और X में फर्क है ना. Only X meaning बस X. X is दोनों भी चलेगा. That is the difference. लैंग्वेज बता रहा था, उनको लैंग्वेज में डिफिकल्टी हो रही. These are the people who read only X. ये जो है, these are the people who read only Y. और ये सर्कल है पूरा, these are the people who read X. only का हटा दिया बस. X पढ़ रहा है मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है, बट ओनली X पढ़ रहा है मतलब बस X ही पढ़ रहा है और कुछ और नहीं पढ़ रहा है. यस, डन. क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है? Let this be X people, let this be Y people, let this be Z people. Fine. First, what are they giving? The number of persons who read X only is thrice the number of people who read magazine Y.
So x is number of people who read x only is equal to thrice the number of people who read y. Second, number of people who read y only is thrice the number of people who read x. ये है ना? यही आना चाहिए. अब इससे ये देखते हैं क्या आ रहा है. No, number of people who read both the magazines is z is twice the number of people who read only x. ठीक है, तो z is equal to 2x ये बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड ईदर वन मैगजीन और बोथ मैगजीन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु रीड बोथ द मैगजीन्स. तो मतलब x plus y plus z is equal to 2 times z. ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट. अब इससे क्या क्या आ सकता है देखते हैं. x is equal to 3y plus 3z. y is equal to 3x plus 3z. If I subtract, z will get eliminated. So I'll get x minus y is equal to 3 times y minus x. Either x minus y is equal to 0 or we can cut it. If we cut it, मतलब -1 लेके, y minus x is minus of x minus y, है ना? Is equal to -3 into x minus y. So either x minus y is 0 or I can cut it. If I cut it, I'll get 1 is equal to -3. Contradiction. So x minus y is 0. That is x is equal to y. है ना? ठीक है. So from here we will get x is equal to y. If I put x is equal to y, so I'll get x is equal to. यार ये कुछ तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में. क्या लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है? ऐसे ही किया आप लोगों ने ऑनलाइन गाइड जिनका आंसर्स आए, कुछ तो अलग किया होगा. इन्होंने अच्छे से ओनली वर्ड्स यूज नहीं किया है, ऐसा मुझे लग रहा है. हाँ, क्या लग रहा है आपको? बिकॉज ये माइनस में आ रहा है ना आंसर्स अदरवाइज. हाँ 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 हाँ. गाइस जिनके आंसर्स आए, अमन, यही क्वेश्चंस आपके बने या फिर कुछ और किया आपने? ये तो नहीं बनेंगे यार क्वेश्चन. लेट अस ट्राई टू इंटरप्रेट देयर लैंग्वेज. नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन एक्स ओनली, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि किसके बारे में बोल रहे हैं. इज थ्राइस द नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन वाई. सो आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट वाई ओनली हियर. अगर वो लिया जाए, the number of people who read y only is thrice the number of people who read magazine x. अब ये कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा. ये भी तो नहीं हो सकता. कुछ है हो रहा है क्या आपका? फिर लेट मी चेक द क्वेश्चन.
यार ये कैसे बनेंगे स्टेटमेंट में, वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ये ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन एक्स ओनली, मतलब एक्स इज थ्राइस द नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन वाई, तो दिस इज 3 टाइम्स समथिंग ना, या तो 1/3 लिखना चाहिए उनको फिर। अमन ये कैसे बने इक्वेशंस? या फिर ये लिख दो कि थ्राइस द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एक्स इज दिस नंबर। इक्वेशन आइडियली दे वांट दिस कि 3x is equal to y plus z and 3y is equal to x plus z, इससे आंसर आ जाता है। बट अगेन व्हाट दे हैव स्टेटेड इज नॉट व्हाट द इक्वेशंस आर। इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम है, बट एनीवे ये बनने चाहिए आइडियली इक्वेशंस। यहाँ पे थ्राइस की जगह 1/3 कर दो एंड यू विल हैव योर इक्वेशंस। यहाँ पे यार इंस्टेड ऑफ थ्राइस मेक इट 1/3। बिल्कुल नहीं अमन, x ओनली मतलब x हियर दिस ओनली, वी हैव टेकन दिस x एज x ओनली। यस आपने 1/3 से किया, पर तो क्वेश्चन तो थ्राइस बोल रहा है ना, तो 1/3 से तो आ जाएगा आंसर। 1/3 से करो, कोई बात नहीं, यूपीएससी से गलती हो गई, ऐसा करके उनको माफ कर दो अभी। हाँ सेम क्वेश्चन में इसके थ्राइस की जगह 1/3 करके सॉल्व कर लो एंड आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस बनेंगे। इससे देख लो कुछ कंक्लूजन्स आ रहे हैं क्या, इससे आ जाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये बोथ द मैगजीन्स इज z इज इक्वल टू 2x, ये बोल रहा है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बोल रहा है अगेन आपका जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, x इज इक्वल टू वाई ही आएगा, बिकॉज x और y एकदम सिमेट्रिकल है, कोई डिफरेंस है नहीं x और y में, तो x और y इक्वल होने चाहिए। इफ यू पुट x इज इक्वल टू y यू विल गेट z इज इक्वल टू यहाँ पे 2x एंड यहाँ पे यू विल गेट y इज इक्वल टू x, करेक्ट। तो एवरीथिंग यू गॉट इन टर्म्स ऑफ x, पुट इट हियर, z इज इक्वल टू 2x, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। सेकंड x प्लस y प्लस z मीनिंग x प्लस 2x, so 4x is equal to 2z, 2 into 2x, 4x is equal to 4x, तो करेक्ट, ऐसे आंसर आता है। बट देन दिस इज इंस्टेड ऑफ थ्राइस इट हैज टू बी 1/3। ठीक है, तो 0 से ही आंसर आता है, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन आता है। सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हो, यहाँ पे सिमेट्री भी दिख रही है ना आपको, x और y एकदम सिमेट्रिकल है, तो इक्वल होने चाहिए वो। या तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो, या तो z इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे पुट कर दो ना x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y पुट करो, y इज इक्वल टू x करोगे तो x इधर आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स क्या है? माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। Now either you cancel or it is zero. If it is non-zero, then you can cancel. If it is zero, you can't cancel. If it is zero, it is x equal to y. If it is not zero, then minus 1 is equal to 3. Contradiction. Otherwise, here you have 3x. Z की वैल्यू क्या है? 3x minus y from here. And यहाँ पे से z की वैल्यू क्या है? 3y minus x. Again, you will get
टेक y that side, x that side. 4x is equal to 4y, x is equal to y. यहाँ पे z की वैल्यू क्या है? 3x minus y. यहाँ पे z की वैल्यू क्या है? 3y minus x. इक्वेट कर दो z equal to z. Then you will get x equal to y. Anyway, let us go ahead. Let others do. Yes, done. क्या है? सबका वही आ रहा है. We have people who students who speak Hindi, English. If 10 students speak both, then what else is given? If number of students who speak English is 21, so here we have 11, and there are total 50 students. So 11 plus total 10, 11 plus 10, 21, and here we have 29. So how many speak Hindi? 29 plus 10, 39. How many speak only Hindi? 29. How many speak English? Only 11. Very, very easy. Next question. कितने बचे क्वेश्चन? 15 मिनट लेके करोगे? टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 12 मिनट लेके कर लो. देन विल डिस्कस टुगेदर. इट्स 9. हाँ हाँ
We have time is 9:17, 12 minutes for 6 questions. 9:30 we shall discuss. Time starts now. क्या हुआ?
मैंने इमेज कॉपी पेस्ट किया है, कट करके लिया है वो, उसमें क्या मिस्टेक? हम्म, अच्छा, हार्ड वर्किंग 2 बार होगी। और Q is intelligent.
डन, यश, लास्ट, खत्म कर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन, टाइम इज ऑलमोस्ट अप, 1 मिनट रिमेनिंग। 12 मिनट हो गया वैसे। यस गुड, मोस्ट ऑफ यू। हाँ हाँ, मैं तभी तो लॉग इन रहता हूँ। यस, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस लास्ट क्वेश्चन। 100 स्टूडेंट्स इन क्लास, 60 स्टूडेंट, ये कर दिया क्या हमने? अच्छा, अलग है, अलग है, ठीक। 60% प्ले क्रिकेट, 30% play football, 10% play both. What is the number of students who play neither? 10% play, so n of A union B is equal to NA plus NB minus n of A intersection B. 60 plus 30, 90 minus 10, 80. So don't play is 20. Very easy. किसी ने गलती की तो बता दो। Please check your answers, online students as well. Last का is B. Second last, yes. क्या है? अच्छा, all artists are whimsical. हाँ, डियर है आपका। All artists are whimsical. Some artists are drug addicts. तो क्या क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने? All artists are whimsical. whimsical मतलब पता है? सर्किट, हाँ। The one who acts only on his whims. Some artists are drug addicts. So it can be like this or like this. Then frustrated people are prone to become drug addicts. तो इसको वेन डायग्राम में नहीं दिखा सकते सर। फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट, फेयर इनफ। आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, नहीं, कुछ भी नहीं है। सम ड्रग एडिक्ट्स आर whimsical, some drug addicts are whimsical. It is going to be there. So answer is B. All frustrated people are drug addicts. नहीं, आप लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं भी हूँ। whimsical people are generally frustrated. नहीं, तो आंसर इज बी। यस, हियर इट इज क्यू रिप्रेजेंट इंटेलिजेंट पीपल। तो क्वेश्चन क्या चाहिए? विच रीजन रिप्रेजेंट्स people who are intelligent, honest and truthful but not hardworking. So this is intelligent, ये क्या है? नॉट हार्डवर्किंग। सो पी छोड़ के ना, तो पी छोड़ के बाकी तीन, तो 6 ना, ये आंसर इज 6A। जस्ट देखना है इधर। हाँ, क्यों होगा वो? बेस्ड ऑन व्हाट सेट? whimsical people are generally frustrated, कहाँ पे लिखा है? ये तो वेन डायग्राम में डाल ही नहीं सकते ना। दिस इज प्रोन टू बिकम। प्रोन टू बिकम कैसे वेन डायग्राम में पुट करोगे? हम्म हम्म कोई रिलेशन ही नहीं है। मैक्सिमम ये कर सकते हो कि जो हमने ड्रग एडिक्ट का बनाया था, ये और ये
So there are some frustrated people who can become drug addicts. Hmm. Yes. Ach. All X brand cars are parked here. X brand cars parked here are white. ठीक है, ये पार्किंग लॉट की कोई बात हो रही है. Some of them have radial tires. Fine. So these are all cars. These are cars of X brand. These are parked here. X brand की अगर यहाँ पे parked है तो वो क्या होगी? White होगी. Fine. Some of them have radial tires. Some of these things. So ये है रेडियल टायर का. Fine. All X brand cars manufactured after 1986 have radial tires. All cars are not X brand. वो तो ठीक है, चलेगा. ये कैसे X brand manufactured after 1986 have radial tires? इसको बस याद रखते हैं, इसको वेन डायग्राम में नहीं डालते कुछ. Only cars are parked here. Only white cars are parked here. No, there can be other cars. Some white X brand cars with radial tires are parked here. ये कहां से आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा. All X brand cars parked here are white. Let us see other options first. फिर देखते हैं. Cars other than X brand cannot have radial tires. No. Most of the X brand cars are manufactured before 1986. No. ठीक है, बेस्ट ऑप्शन तो बी ही है. हम्म 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 हम्म. हाँ ये ठीक है, ये 1986 के बाद वाले. हाँ हाँ हाँ. These are the cars that are parked here. These are X brand cars. अगर यहाँ पे पार्क्ड है तो वो व्हाइट ही है बस. इजी क्वेश्चन थे पुराने जमाने में. नेक्स्ट. जीएस भी इजी होता था कंपेयर टू टुडे. लास्ट ईयर का तो पेपर काफी टफ था जीएस का. हम्म. तो अरे उस टाइम पे वो भी था ना, मटेरियल भी उतना अवेलेबल नहीं था. हाँ. हम्म. हाँ, इसका आंसर प्राइमरी ग्रुप इज अ रिलेटिवली स्मॉलर साइज ग्रुप. ठीक है. इंटीमेसी इज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप. वो भी ठीक है. अ फैमिली मे बी एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप. ठीक है, पता है मतलब हम लोग को सब. इन लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल फैमिलीज आर प्राइमरी ग्रुप्स. क्यों? मे बी एन एग्जाम्पल. ठीक है. बी ऑल प्राइमरी ग्रुप्स आर फैमिलीज. नो. A group of smaller size is always a primary group. No, intimacy is essential character. Members of primary group know each other intimately. Oh, fair enough. Better answer is D. अगर वो नहीं होता तो वो फैमिली वाला भी ठीक ही हो जाता. But yes, this is better answer based on the statements. हम्म. हाँ, बड़ी फैमिली हो सकती है. किसी फैमिली में किसी दादाजी के 18 बच्चे हो सकते हैं. उस 18 के हर 18 हो सकते हैं, तो हो गया बड़ा फैमिली. अब कौन किसको इंटीमेटली जानेगा. Anyway, out of 120 musicians in a club, 5% pay all the three instruments. It happens that
number of musicians who can play any and only two of the above instruments is 30. The number of musicians who can play guitar alone is 40. What is the number of people who play violin alone or flute alone? अच्छा, 44 आ रहा है, उनका भी 44 आ रहा है. देखो म्यूजिशियंस बोला है तो तीनों में से कोई तो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करेंगे, ऐसा अजम्पशन है यहाँ पे. तो ये है ना. या तो ये भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से हो रहा है क्या? देयर आर 120 पीपल इन द म्यूजिक टोटल. वी वांट number of people NV plus NF plus number of people who play गिटार अलोन. गिटार अलोन का नहीं चाहिए हमें. चल छोड़, इससे नहीं होगा. 5% play all the three instruments, then only two of the above instrument is 30. So this plus one, अच्छा 5% of 120. चलो ठीक है. So this is 6 people. 5% of 120 ना. ठीक है. So this plus this is 30. राइट. तो मैं 30 यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट आई नो कि ये पूरा मिला के है. नहीं नहीं, ओनली टू बोला है ना. एंड ओनली टू अबाउ इंस्ट्रूमेंट, तो 3 नहीं, ओनली टू. तीनों मिला के ना. गिटार, फ्लूट एंड क्या है तीसरा? वायलिन. अरे 6 तो 3 वाले है भाई, वो तो नहीं होंगे. ओनली टू. हाँ हाँ मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो. इतने तो लोग ही नहीं है. लोग है उतने. तो हमें क्या बोला है? दिस और एंड दिस प्लस दिस. कितने लोग हैं अब? टोटल 120 लोग हैं. वी हैव 30 प्लस 40, 70 प्लस 6, 76 people are here. 44 people are. Rest of the thing. Answer is B. Correct. क्या? 5% ऑफ 120. 120 लोग है, उसका 5% क्या होता है? 10% 120 का वो 12 होता है. 5% चेक सिखो. हाँ हाँ बीच में ना ऑल थ्री. 5% ऑल प्ले ऑल थ्री इंस्ट्रूमेंट्स. यस, कितने सही आए? ऑल. वेरी गुड. एक गलत. कौन सा? अच्छा. हम्म. एक्सेप्ट दिस. यही नहीं आया. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल. वेरी गुड. अश्विनी. Yes, so we are done with syllogism, Venn diagrams. You can pick any of the two methods that we have studied and stick with it. Practice करो, worksheets भी करो, and जो भी आप marks दोगे, stick with one method. ठीक है? Yes, income expenditure ठीक है. जो भी आपको, हाँ बताओ क्या था वो क्वेश्चन. ओके यस, टेस्ट सबने दे दिया अभी सीसैट 1.2. जीएस गाइस आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लो 2 मिनट के लिए, देन आई एक्सप्लेन. वी हैव 3 पेयर्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ना, ऐसा कुछ था ना.
वी हैव पीएनसी का है, क्वेश्चन इज वी हैव सर्कुलर टेबल हैविंग 6 equal मतलब 6 seats and there is symmetrical, they are symmetrical. We have 3 pair of husband wife. और क्या है, क्वेश्चन क्या था? how many ways are there so that they sit opposite या not sit opposite, ऐसा कुछ तो था. अच्छा, इसके वेज निकालने हैं. फाइंड number of ways such that husband and wife don't sit opposite to each other. मुंह देखना नहीं है, अपोजिट बैठ के किया है ये. टेस्ट में था क्वेश्चन ये. आई विल गिव यू 2 minutes टू ट्राई. अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो बताओ, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जितना दिया है उतना है, अपना दिमाग ज्यादा मत चलो. वो क्यों सोच रहे हो क्या नहीं है क्या है, जितना दिया है उतना दिया है. नहीं आया क्या? आई विल टेल देम. अच्छा, ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन थे
Options are this: 64, 117, 96, 56. यस, कुछ हो रहा है क्या? ओके अमन, दैट इज देयर इन द ऑप्शंस, गुड. शुड आई एक्सप्लेन? और करना है, और इसलिए टेस्ट दिया था, घर जाके कर लेते. तो क्या करना है? वी हैव टू मेक केसेस, ऑब्वियसली डायरेक्ट तो नहीं होगा. इधर यू मेक केसेस टू काउंट इट, और यू subtract cases which are not satisfying the given condition from the total number of cases. Second approach is a bit easier. So if I drop all the conditions, जो opposite बैठने वाली condition अगर मैं drop कर दूं, तो what is the total number of way to sit? हाँ, मतलब कोई condition नहीं है, 6 लोग है, husband wife है 6 लोग, and they are going to sit on 6 chairs in a circular table. How many ways are there to do that? मार खाओगे ना. सर्कुलर अरेंजमेंट भाइयों, बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? 6 फैक्टोरियल कैसे? सर्कुलर अरेंजमेंट है ना. So 120 ways are there. 5 factorial. When the first person goes and sits, then the order is decided. Before that, there is no order. All the chairs are equal. So there are 120 ways. What we'll do is we will remove the cases where husband and wife sit opposite to each other. ठीक है, अब करना है ट्राई 1 मिनट के लिए, या बता ही दूं? बता दे. So what we can have is, we can have only one husband and wife sitting together. We can have only 2 husband and wife sitting together, and only 3 husband and wife sitting together. These 3 cases can be there. Correct. How many ways are there such that only all the 3 husband and wife sit opposite to each other? सारे एक दूसरे के सामने बैठ रहे हैं. चलो 1 से स्टार्ट करते हैं. देयर इज ओनली वन हस्बैंड एंड वाइफ, वन पेयर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु सिट अपोजिट. बाकी दोनों अपोजिट नहीं बैठ रहे. ठीक है, तो देयर इज अ सर्कुलर टेबल. यहाँ पे चेयर्स है. वन पेयर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विल सिट अपोजिट. ठीक है, लेट इट बी H1 एंड W1, कोई तो H1 W1, they sit opposite to each other. Correct. Now H2 enters, he can sit any of the 4 places. ठीक है, कहीं पे भी बैठ सकता है ना. 4 places he can sit anywhere. जहां पे भी बैठेगा
Hi, then when his wife enters W2, she will not sit opposite to him. So how many positions he has? She has two. Correct. Correct. Now third husband comes. He has two positions. तो let H2 sit अगर यहाँ पे बैठा तो उसकी वाइफ यहाँ पे बैठेगी और ये लोग यहाँ पे दो कहीं पे बैठ सकते हैं. So there are H3 comes, he can sit anywhere and जो भी बची हुई प्लेस है वहां पे W3 बैठेगी. How many ways are this? 16 ways. But initial choice of H1 W1 was random. So I can have any of the husband and wife sitting opposite. Correct? How many ways are there? 48 ways हो गए. हो गए. Correct? ठीक. Now, how many ways are there such that only two husband and wife pairs sit opposite? Is there any such possibility? कि दो ही पेयर बस अपोजिट बैठ रहे, तीसरा पेयर नहीं बैठ रहा. इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ दैट काइंड? दो बैठ रहे तो तीसरे को चॉइस ही नहीं है, तीसरे को बैठना ही पड़ेगा. If two are sitting opposite to each other, there is no option for the third couple rather other than to sit opposite. Zero cases like that. Correct. Now, third case, when all the three couples are sitting opposite to each other. So let H1 goes and sits here. W1 goes and sits opposite. Then H2 goes W2. H3 goes W3. Correct. But observe that if I keep these people sitting as they are, I can switch H1 and W1, H3 H1 and W1. H1 W1 की जगह W1 H1 भी हो सकता है. And those two arrangements are different. Similarly, keeping others fixed, H2 W2 can switch, H3 W2 can switch. Switch meaning two options. No? One is this, one is ulta. 2 into 2 into 2, 8 ways. पहले 48 और ये 8 मिला के कितने हो गए? एक ये अरेंजमेंट अपोजिट टू बैठना है, बट अपोजिट मतलब बाकी लोग अगर बैठ रहे हैं, चार चार बाकी फिक्स्ड है, तो मैं और तुम स्विच भी तो कर सकते हैं पोजीशंस. तुम्हारी जगह मैं, मेरी जगह तुम, क्योंकि बाकी लोग फिक्स्ड है तो ऑर्डर चेंज हो गया ना. इट्स जस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन. हो यस कार्तिक है. हम अप्रोच ऐसे कर रहे हैं इसे कि if we drop all the restrictions in circular arrangement, we know that there are 5 factorial ways to sit these people. If you don't have any condition, 5 factorial is 120. And now we are subtracting all those cases where husbands and wife, at least one husband and wife, are sitting opposite to each other. So these are the firstly we subtracted number of cases wherein only one pair of husband and wife sit opposite to each other. So for calculating that, we first allowed one husband and wife pair to go and sit opposite to each other. That choice was random. So there are 3 ways we can choose those husband and pair. कि कौन husband wife का pair अंदर जाके सामने सामने बैठेगा. There are 3 ways to choose this because there are 3 couples. And after these 3 ways, what we do is the next husband comes and he has 4 positions to sit. He has 4 choices, 4 options. When his wife comes inside, she can sit at 2 positions except one opposite to him. बचे हुए 3 में से उसके अपोजिट बस नहीं बैठेगी वो, और 2 जगह पे कहीं पे भी बैठ सकती है. तो she has 2 choices. After she makes her choice, next husband comes and he has then 2 chairs left and he can sit anywhere. अब वाइफ, उसकी वाइफ के लिए एक ही सीट बची है, उसको वहीं पे जाके बैठना पड़ेगा. She does not have a choice. So these are the total number of cases: 3 into 4 into 2 into 2. So this is 48. So 48 cases are there such that only one pair of husband and wife sit together.
अपोजिट वाला केस मतलब अमन मैं समझा नहीं, अपोजिट वाला केस रिमूव किया मतलब कैसे किया? ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन करें। रह गया था, वो कल कर लेंगे, वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, आना चाहिए उसका, तो वो तो पीवाई क्यू था, वो कोई इसका पीसीएस का क्वेश्चन होगा बाद में देख। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं। वो तो कॉमन कॉमन देखना है, उसमें क्या है। यस प्लीज रीड दिस इज लिटिल डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर है। यू कैन नहीं यार, ऐसे कैसे कर सकोगे? एक, नहीं मैंने बनाए नहीं थे, कुछ बाहर से बनवाए थे, कुछ बाकी पीसीएस से उठाए थे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस। हम्म। यस। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कार्तिकेय, संदीप, अश्विनी। ओके।
B and C. यश C. आप लोग B. Cello is B. Two options you are confused with. Fine. The intake pipes of nuclear plants and water plants along Great Lakes are clogged by a certain variety of mussels that proved to be causing nuisance to the working systems. So these mussels are causing uh, nuisance. But it is found that the bags of these calms, when suspended in effluent streams of chemical plants, not only improves water quality significantly, but also removes some hazardous waste from effluents just by feeding voraciously on the algae that they filter from water that passes by it. ठीक है, but ये तो clog तो करते हैं, but if you put it on the floating water, especially the chemical filled water, then they eat that voraciously and they keep it clean. वैसा ही है ना, they remove some hazardous waste from effluents. ठीक है. Which one of the following inferences given below, if true, most strongly supported on the basis of information given in the above paragraph? ठीक है, अगर ये सही है इनमें से कोई भी एक चीज तो वो सपोर्ट करेगी उस above paragraph. First, if the mussels spread to areas of the rivers and displace native calms that support cultured pearl industry for decades, that industry will collapse. Nothing. It's about pearl industry. This statement is about pearl industry. It has nothing to do with pollution and how it removes it. 2. If the mussels fail to consume the quantity of algae available to them, then the intake pipes of nuclear plants and water will get clogged by it. If the mussels fails to consume quantity of algae available to them, if they fail to consume that due to variety of reasons, then the intake pipes of nuclear plants will get clogged by it. Q. What is your rationale? That is in the open waters. Streams, suspended in effluent streams of chemical plants. Not in the around the Great Lakes pipes, they are causing nuisance because they are clogging it. The reason for clogging is not given. But they are saying if the effluents, if they put it in the effluent plants, streams, then it improves water quality significantly just by feeding on the algae that they filter from water that passes by. जो chemical plant से water निकल रहा है, these things remove algae with it and with it attached wastes. तो अगर second true है, if the mussels fails to consume the quantity of algae available to them, then the intake pipes of the nuclear plants will get clogged by it. ठीक है, other options देखते हैं फिर. If the waste from effluents are not transformed into non-hazardous chemicals by these mussels themselves, then these mussels themselves will become hazardous pollutants. Hmm? Fourth is these mussels are brought in the area through freighters and are thriving there since their population is not controlled naturally in the ecosystem. वो तो कुछ नहीं है. That is again very tangent thing. तो option 2 और 3 में ही confusion है. ठीक है.
थर्ड ज्यादा सही है क्योंकि देखो, हाँ, इफ द वेस्ट फ्रॉम द एफ्लुएंट आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉन हजार्डस केमिकल्स बाय दीज म्यूसेल्स, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए. इफ यू पुट कॉमा हियर देन with themselves is not mucels. I think themselves they're talking about this wastes. This waste will become hazardous pollutant, which is fair enough. हाँ. हाँ. हम्म. हम्म. नहीं डालना है ना फिर. Official answer is also 3 here or C here. हम्म. 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 Anyway, चलो next. Study the reasoning used in arguments given below and select the option that most closely follows the same reasoning. So you have to select an option which follows the same reasoning as this statement. इस statement में कुछ reasoning दिया है, ठीक है, इसकी वजह से ये हुआ, तो same reasoning follow होना चाहिए in one of these options. You have to choose. Time starts now. Last answer is B. Sorry, C. Karthik. Official answer is C. Yes. Hmm. चलो. अजिंक्य. नो आइडिया. हम्म. क्या क्या क्या. हम्म. सी. हाँ. With water and sunlight, this plant will thrive. Since both water and sunlight are necessary for plant survival. बिल्कुल. वर्बैटिम. अच्छा. आपको 1 and 4 में डाउट हो रहा है, आपने 1 बोल दिया. Then some are saying B, some are saying C. So basically all 4 options are on the table. किसी को और अटेम्प्ट करना है, अब बता दो, देखते हैं. If heat or light is emitted by a body
if heat or light is emitted by a body, then its energy decreases, right? Fine. It follows that if a body's energy remains constant, it has emitted neither heat nor light. Fair enough. First, when either freedom of speech or freedom of assembly is present in the society, democratic government inevitably results. Correct. If you live under a dictatorship, you must therefore lack both of these key liberties. Similar hai argument. What was the core of our argument? That if A happens, then A is this. If heat and light is emitted, then if A happens, then energy decreases, that or that B is true. So if A does not happen, then B is not true. So here they are saying when either freedom of speech or expression or assembly is present in the society, if this is there, then democratic government results. If A happens, B is the result. That is democratic government. So if you live under the dictatorship, that is, if B does not happen, B has not happened, energy not decrease. If energy remains constant, so it means that A has not happened. That is democratic. You must therefore lack both of these. काफी similar है. Let's look at other options if there are any better. Second, either the fans are very loyal or they don't mind the team losing week after week. Huh? RCB, any fans? No fans like to watch their team being beaten, so they must be very loyal. Huh? कौन सा समझ नहीं आया शगुन? दिस इज डिफरेंट फ्लेवर, थोड़े अलग टाइप के हैं. ये यूपीएससी ने नहीं पूछा है, बट आई थिंक आपको 2-4 तो देखे हुए होने चाहिए ताकि एकदम सरप्राइज ना हो अगर पूछे. हाँ, सेकंड इज नॉट ट्रू. मतलब सेकंड फर्स्ट जैसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं होना हुआ होगा वाला आर्ग्यूमेंट. ये बोल रहा है कि either these two things or no fans like to watch their teams being beaten, that is true, so they must be very loyal. ये सेम आर्ग्यूमेंट है नहीं, ये अलग आर्ग्यूमेंट है. थर्ड, with water and sunlight this plant will thrive since both water and sunlight are necessary for a plant survival. If you give water and sunlight to plant, it will thrive because they are both necessary for their survival. अब ऐसा आर्ग्यूमेंट है क्या ये वाला? ये वाला बोल रहा है अगर ये हुआ तो वो हुआ होगा, अगर ये हुआ तो वो होगा, तो सिंस ये नहीं हो रहा है तो वो भी नहीं हुआ होगा. एकदम अलग आर्गुमेंट है. लास्ट, एनीबडी ओवर 21 who holds university degree or equivalent is eligible for selection. Okay, since Amina is 19 and still an undergraduate, she cannot be eligible. सिमिलर था, साउंड कर रहा है. अगर वो 21 या फिर यूनिवर्सिटी है तो वो एलिजिबल है. हाँ, तो अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता ना कि क्योंकि वो इनएलिजिबल है तो वो होगी 21 से कम या फिर यूनिवर्सिटी डिग्री ना होल्ड करने वाली होगी, देन इट वुड हैव बीन ट्रू. राइट. यस. क्वेश्चन कैट का नहीं है ये एमपीएससी का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके सीसैट में आता है ये. ऑप्शन 1 is the official answer. Yes. There are 5 questions like this. वो भी सेम. यस. हाँ, नहीं बस यही टफ होता है, बाकी एकदम 5 क्वेश्चन ऐसे टाइप के होते हैं, बाकी पूरा पेपर एकदम इजी होता है, नॉर्मल होता है.
पैसेजेस अभी भी पुराने जमाने जैसे आते हैं, जैसे यूपीएससी में पहले आते थे ना कि बड़ा पैसेज और उस पे 5 क्वेश्चन और आंसर उसी में होता है। दिस इज नॉट कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, वो एंड में कहीं पे तो ये पूछ लेते हैं ऐसे। आज पहला क्वेश्चन सही हुआ, गुड। चल ठीक है, करे आगे। नाउ इसमें देखो क्या करना है, देयर इज अ argument that is being made here in the passage, and the question says choose the one that most reasonable fact that would weaken the above argument. Weaken the above argument मतलब if this fact that are in the options is true, वो इस argument को weak करेगा, ठीक है। Time starts now. Ashwini, this is not decision making. Decision making के क्वेश्चन अलग होते हैं। These have single answer. Decision making में multiple answers हो सकते हैं। हम्म ऑप्शन से आर्गुमेंट वीकन होना चाहिए। यस, बी, बी, ए, बी, अच्छा बी। क्या बात है यार, बी क्लियरली मेजॉरिटी आ गई इस पर, बट सम पीपल आर स्टिल विद सी। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? कौन बचा है? संदीप, बी, ओके। दानवी, श्रव्या, व्हाट अबाउट यू गाइस? शगुन, वाइटनर, पहले ए बोला फिर सी बोला फिर बी बोला। ओके, लेट अस रीड द पैसेज। राला, सावा, हरीक, वराई are rich in amino acids, fatty acids and other vitamins. These are millets, right? They contain minerals that are iron, calcium, magnesium, phosphorus and potassium. Minerals, ये सारे contain करते हैं vitamins, minerals, as fatty acids, amino acids वगैरह। These food components assist in the functioning of hormones in the body, right? The amount of glucose and insulin produced in the body is controlled by them. So benefits of millets गिना रहे हैं। Since their digestion is slow, they stay in stomach for a long time, so you get the satisfaction of being fully
बीइंग फुल बाय ईटिंग लेस, पेट में रहता है वो तो ज्यादा तो भूख नहीं लगती तो वजन कम रहेगा. They are rich in lecithin, which strengthens the nervous system. It its photochemicals reduce the risk of cancer. Blood cholesterol is reduced. Whole grains provide 12.5% more proteins than wheat. तो ये सारे benefits गिना रहे हैं millets के. And lastly, there is comparison with wheat something. So you can actually make a note of this and write millet वाले answer में. So good enough. It's nice. Sava is used in liver disorders. Since millets are gluten free, they can be consumed by people with gluten intolerance. Fine. In short, whole grains are useful for body health due to various characteristics. That is the argument. Now we want to weaken this argument. First, South Indians whose food mainly consists of rice, nachni, kuttu chana, tur, udad do not suffer from digestive problems. Huh? Selva, do you suffer from digestive problems? Not true. Again. Second, if wheat is completely excluded from the food, the person does not get vitamin B, zinc, bran, which are important elements along with gluten, and as a result, the beneficial bacteria in the intestine. So basically, this statement is saying that wheat is also important, which will weaken the argument, which was basically to say that millets are much more beneficial than wheat. But this statement says that wheat is also very important for the body, weakening the argument above. ऐसा नहीं है कि बस मिलेट्स ही खाते रहो, व्हीट भी खाना जरूरी है. अच्छा, ये पूरा भी स्टेटमेंट है. आर डिप्लेटेड एंड द कम्युनिटी ऑफ इंटेस्टाइन इंक्रीजेस अनरिजल्टेंट रेयरली इनवाइट्स कैंसर. मतलब वही है, व्हीट के बेनिफिट गिना रहा है ये ऑप्शन, तो वही ऑपोजिट है उसका. दैट विल वीकन द आर्गुमेंट. यस, वहां और व्हीट को कमी कमी दिखाई. यहाँ पे व्हीट को उन्होंने अच्छा बताया. So this is going to weaken that argument. See, people with congenital celiac sprues cannot digest gluten in the small intestine, so they have to eat foods where gluten is not detectable. वीकन तो नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि वो ऊपर वाला बोल रहा है कि मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री. ये बोल रहा है कि हाँ, ये अगर डिसऑर्डर है तो मिलेट नहीं खा सकते. ठीक है. ईटिंग व्हीट इज नॉट इनएविटेबल एज पल्सेस, ऑयल, मिल्क, फिश वगैरह वगैरह. तो बोल रहा है, वही बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि व्हीट अच्छी बात नहीं, जो पैसेज में बोला है कि ईटिंग व्हीट इज नॉट इनएविटेबल. ठीक है. सो आंसर इज गोइंग टू बी बी. ऑफिशियल आंसर इज आल्सो बी. बी या फिर 2, नंबर 2. फाइन. लास्ट है. वीकन तो नहीं करेगा ना, दूसरी डायरेक्शन में है वो. ये सब की बात की भी नहीं गई है पैसेज में. हाँ, तो ये सब बातें कर रहे हैं. ओके, विल स्टॉप हियर. Tomorrow CSAT 1.0, we will start with data interpretation and data sufficiency, and one more booklet you will get wherein the topics I mentioned, which have been mentioned in the UPSC syllabus, but they have not asked question for last 12, 13, 14 years. They will, that I will give one booklet. क्यूब डाइस वाला एक बच्चा है क्या पैसेज? ओके, अगर आपका मन है तो कर लेते हैं. क्यूब्स एंड डाइस, वेयर इज इट? ये वाला. यस, छोटा सा. ओके, फाइन. टाइम स्टार्ट्स नाउ.
यस, टाइम अप। डी। ए। हम्म। यस। यस, बताओ। यस। इतना टाइम नहीं है अपने पास, 3 मिनट हो रहे हैं। ये छोटा सा पैसेज है। Okay, let us read. Disruption of traditional institutions, identifications, and loyalties is likely to lead to ambivalent situations. Ambivalent मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम confused. It is possible that some people may renew their identification with traditional groups, whereas others align themselves with new groups and symbols emergent from processes of political development. होता रहता है वो. When new identities emerge, old have not died. There is confusion all around. So some people will go and cling to old ones, some people will adopt new ones. In addition, political development tends to foster group awareness of variety of class, tribe, region, clan, language, religion, occupation and others. Political developments इनके awareness बढ़ाता है. ठीक है, मतलब जितना politically aware लोग हो जाते हैं उतना ये सब चीजें बढ़ती है. क्लास, रिलीजन, तो कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, ट्राइबल पॉलिटिक्स, क्लैन पॉलिटिक्स, ये सब लैंग्वेज पॉलिटिक्स, ये सब बढ़ेगा जितना पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगा. Question: which one of the following is the best explanation of the above passage? We want to capture a passage, essence of the passage in one statement. A. Political development is not a unilinear process, for it involves both growth and decay. Okay. B. Traditional societies succeed in resisting positive aspects of political development. ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने उल्टा बोला है कि there will be groups or there are people who shift to new ones, there will be people who shift to old ones. So ये तो resist तो नहीं कर रहे. C. It is impossible for traditional societies to break away from lingering loyalties. नहीं, बिल्कुल नहीं. कुछ लोग कर तो रहे shift loyalties, कोई problem नहीं. D. Sustenance of traditional loyalties is conducive to political development. Passage is saying opposite. Passage is saying पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से ये ट्रेडिशनल लॉयल्टीज और उभर के आती है, नॉट द उल्टा. Passage is saying political development tends to foster this group awareness of these kinds of groups, not the ulta. The sustenance of traditional loyalties is conducive to political development. It is not conducive. It's political developments that lead to these kinds of loyalties getting highlighted या फिर awareness उनका बढ़ना. So answer is A. Official answer is also A. It's a PYQ. Because political development is not a unilinear process. New identities, new groups come. ग्रोथ एंड डीके दोनों होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है. मतलब इट्स नॉट अ यूनिलिनियर प्रोसेस. सो थिंग्स विल चेंज, एम्बिवेलेंस विल बी क्रिएटेड. एम्बिवेलेंस मतलब इट्स लाइक कंफ्यूजिंग सिचुएशन. एम्बिवेलेंट हाँ. बट बाकी तो गलत ही है ना स्टेटमेंट्स. हाँ, नहीं नहीं, इट इज, देखो ना, तो ये सब हो रहा है तो पीपल विल शिफ्ट आइडेंटिटीज. पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटीज इनहेरेंटली लिंक्ड इन डेमोक्रेसीज. व्हेनेवर पीपल विल हैव राइट टू वोट, आइडेंटिटीज विल कम इनटू प्ले. वो कोई भी आइडेंटिटी हो. तो न्यू आइडेंटिटीज, ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज, दे विल गेट मिक्स्ड. ऊपर नीचे होता रहेगा. Some will align with new groups, for some with old groups. Why the groups? Because group strength matters in democracy. वही political development finally वो आया. पैसेज है, मतलब पूरा आर्टिकल वैसा बनाया होगा उसने, बट दिस इज व्हाट वी कैन गैदर फ्रॉम दिस कि बाकी तो गलत है, फर्स्ट इसलिए सही हो. एंड यस, ऑफिशियल आंसर इज ए.
चले GS GS guys, I will need two of your lectures in next week in between 11 to 1:30 जब अपन clocks करते हैं, because I have very few lectures left of you but topics बहुत सारे बचे. इस वीक भी एक कम दे दिया मुझे, तो ओवरऑल मुझे बता दो आप मंडे ट्यूसडे इफ यू गाइस आर फाइन विद 11 to 1:30 वी विल कवर क्लॉक स्टिल इन दैट एंड 8 to 10:30 कुछ और कवर करेंगे. सो आई वांट मोर लेक्चर्स, आई वांट टू फिनिश. ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा सिलेबस कंप्लीट. थोड़ा वेळ आया तुम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में भी. यस, ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे.